जय माता दी आदेश नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग welcome to the midnight session of market analysis. Okay, so very quickly let us start today's session. There are a lot of system issues running these days, so I'm running short of time and all these things are happening, but okay, I still tried my best to come live today because tomorrow is a important session and this week is going to be a very important one. So let us see how things are shaping up after today's decline in market. जय माता दी, आइए चलिए जुड़ जाइए जो भी फ्रेंड्स अभी लाइव हैं. Let us start today's session. So Nifty, first we will start with Nifty. So Nifty today uh, almost a slight gap up opening happened on Nifty, and then there was a sharp rejection from the upside because of Bank Nifty. So Bank Nifty, we have seen a very solid weakness, and Bank Nifty opened below our daily and weekly mob level. So that reinstated the weakness and continued the weakness throughout this session. So कल रात को जो मैंने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी पे जो लेवल मैंने दिया था that level worked beautifully, but at the same time I was not expecting bank nifty to break so easily below 22,000, but that happened. So level worked, but the anticipation that bank nifty should take support at least today, I wasn't expecting any bounce in bank nifty, that is very honestly I'm saying, but I was thinking that 22,000, maybe 21,950, that 50 point 100 point zone that can hold for today, and tomorrow once again we will go little lower and then probably we can reverse. So that was the expectation, but that did not happen in bank nifty, and bank nifty showed a massive weakness because of ICICI bank and all these stocks. Nevertheless, no issue. Let us see how nifty is shaping up on daily chart. So as I have explained before also, I'm expecting this entire fractal to repeat once again. Now, if we look what has happened in the past, a very similar kind of structure I see repeating in Nifty at least. Okay, and probably on Bank Nifty also. Now, tomorrow is a crucial day. I expect market. You see, tomorrow is a crucial day. I expect market to make a bottom for this week tomorrow. That is what is my just making. Now, overall view remains bullish only. Market जो है bullish ही है, and for this week the level that I had given 11,120. If you recall, yesterday based on this line chart I have given you this level of 11,120. आज के लिए निफ्टी में जो मैंने ट्रेड प्लान बनाया था, आई थिंक मॉर्निंग में वो चीज एब्सोल्युटली परफेक्टली काम की है. मैंने क्या कहा था दोस्तों कि अगर बाजार नीचे गिरता है 11,140 से लेके 11,020, 11,120, 11,120, 11,140, these are the supports for Nifty, and I don't see Nifty sustaining below these levels. If I get market near these levels, I will definitely buy for higher targets of 11,200, etc. So intraday market penetrated below the 11,120 mark, but as expected it could not sustain, and then there was a bounce towards 11,180, 177, 180. But because bank nifty was too bearish, and today Reliance also could not sustain the gains, nifty had to correct. So ठीक है, overall I don't think that there is any trouble as of now. Trouble will come, but right now it is still very much part of the game which is going on. So yeah, so that's all. Let me give you the levels for tomorrow once again. Tomorrow we have to
pay close attention to the 11,120 मार्क 11,120 ये कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इफ यू सी द लास्ट फोर कैंडल्स इफ यू लुक एट द लास्ट फोर कैंडल्स एवरी डे दे गो बिलो दिस लेवल बट क्लोजिंग पे डिफेंड कर लेते हैं राइट तो अब ये जो मार्केट का बिहेवियर है कि हर दिन ये एक 11,120 के नीचे जाके इसको डिफेंड कर लेता है अब आप ये सोचो कि किसी दिन अगर ये बिहेवियर चेंज कर देगा दैट मीन्स मार्केट हैज come under pressure and market wants to revisit the lower levels in that case I've already explained 11,032 and 10,980 will be the downside targets even on downside if market holds the 11,030 mark which I believe it will hold then market will bounce back again very sharply maybe the next day so again it will do something like this it will go on the downside but again come back very strongly in this particular fashion maybe not that day but maybe next day similar kind of behavior which happened recently this is what I'm expecting that same thing I'm expecting so initially I had thought that these are very very nice structure so probably market can go once on the upside and then give a drop so market indeed went on the upside but it could not surpass the previous highs by a significant margin so it went on the upside it came also but had it been a case like this just like last time it happened then we would have turned shorters in this market so till now it has not happened so we are not neither very bullish nor very bearish we will follow the levels so for tomorrow the mob level that I am keeping is pretty much 11,140 so I would say 11,140 that is the mob level for tomorrow 11,140 which is the middle portion of today's session and below this 11,090 this is the first target and 11,066 is the second target above 11,140 I will definitely target straight away 11,200 mark and then 11,244 so these two levels on the upside and two levels on the downside I will closely watch the 11,140 mark because this is very important now one more thing if market goes towards the 11,090 mark and it is not giving any kind of a follow through keep in mind that this behavior may come into play and market will again bounce back strongly and come back again above the 11,120 mark if it comes back again at 11,120 mark then it will not go below it will not go and make a new low it will come retest and it will shoot again on the higher side तो इस तरीके से ये पूरा एक एक्शन हो रहा है इसमें खास कोई भी क्रैश या ऐसी वैसी कोई सिचुएशन नहीं डेवलप होने वाली है इट इज जस्ट psychological some time correction is happening because market is very very overbought if you look at the 21 DMA it is still at 10,800 and market is almost at 11,200 there is a difference of 350 points right so market because it ran up so much last time and there wasn't any solid auction in this entire portion that is why market is just trying to do some sideways correction probably some price wise correction as well so that's fine okay so that's on the Nifty now let me take very quickly bank nifty में ज़्यादा discussion नहीं है because one thing is very clear now bank nifty definitely has to do a massive reversal to bring back the bulls so on bank nifty what I had said that daily chart is bearish but weekly chart मुझे bullish लग रहा है provided we start to trade above the 22,800 mark provided we start to trade uh, above the 800 mark okay so that did not happen unfortunately and in morning opening itself was very very bad so obviously ये व्यू तो फिर out of the window हो चुका है and market continued to trade on the downside now for tomorrow for tomorrow on bank nifty the mob level is 22,300 approximately if you look at today's activity sorry not this is the mob level 22,008 so this is the zone which I will be watching very very closely like this
and then we were holding, we were taking resistance, and then the follow through happened even before the last slide. Market tested this level, so obviously there is something very important at this level. So that is why this level should act as resistance. So the mob level for tomorrow for Bank Nifty spot is 22,168. Roughly you can consider 22,000, say 200 also. This 30-40 points band doesn't make difference. So this is the level that I will be watching. Below this, there is one target which is 21,900, which has already come today. Maybe it can come tomorrow also. And then second target can be little big, and that is 21,650. Okay. Now, if Bank Nifty suppose sustains above this 22,168, if it sustains above this, then definitely Bank Nifty में एक initial round of strength आएगा, एक initial round of strength आएगा, and depending on how far that strength carries, that is how we will see, how far it goes, right? So about 22,168, one target which I feel that should come is 22,427, 22,427, which is the breakdown area. So this breakdown, double bottom breakdown, which happened today, is still not tested. That is why, the logical target about this is straight away retest of this level. Fine. Okay, so 22,427, this is the first target, and second target will be 22,550, right? So these two targets on the upside, two targets on the downside. 22,168 is the mob level for Bank Nifty spot. So that's all on the Nifty and Bank Nifty front. If there are any stock queries, then we will definitely take these stock queries. Okay. Global markets as of now, it's a mixed bag. US market is slightly positive. Europe is uh, negative, slightly negative. Gold is on fire. I've been consistently saying that, do not short gold. Gold can still run up a lot. Today also, I think many people have burned their hands shorting gold. Tomorrow also, once again, it will open cap up. Tomorrow will be very crucial day for gold. So I will speak something about gold tomorrow. Fine. Okay. What else? Uh, yeah, Bajaj Finance. Okay. So interesting case. Bajaj Finance game is set for tomorrow, right? Let me open the chart of Bajaj Finance. So Bajaj Finance, yesterday I explained that 3200 is a crucial level. Below 3200, 3135, 3150. These levels should come, but these levels are very very important ones. Okay. So I have bought Bajaj Finance in cash, and we will see how it pans out. This entire band is very very nice. Okay, but for FNO traders you have to be very very careful, because it is the expiry week and Bank Nifty is bearish. So for financial stocks you have to be very very careful, especially if you are trading in FNO. If you are putting in cash, then that is still manageable, but FNO, very very careful. Okay, so for Bajaj Finance, what I would suggest for tomorrow, if it crosses about 3200 level in the cash segment, then strength will come. And very easily you can see 3250, 3250 can be seen very easily. One closing now, one closing above 3200, one closing above 3200 will definitely bring 3358, will definitely bring 3358. Okay, so that's the updated view on Bajaj Finance. So cash guys can buy near 3136, 3135. This is the zone. But FNO guys have to pay close attention. If you buy at the absolute bottom, which is around 3136 or 3145, then please keep in mind that that is a value buy level. It is not a reversal level. It's a value buy level for cash guys. FNO, if you are buying at these levels, you have to use some stop loss, strict stop loss. Suppose it reverses, closing about 3200, then next target is 3358. Okay, so let us see how it pans out.
पाउंड इज ऑन फायर, यस। इस महीने के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि पाउंड को बाय कर सकते हैं। यूरो को देखो, लुक एट यूरो। यूरो पे मैंने बोला था कि बिंदास बाय करो। यूरो, पाउंड, येन एंड all three cross currencies have run up very very strongly. REC. Okay, REC has crashed today from 105 to 100. Okay, stock is looking very very bad. Definitely लास्ट सपोर्ट है इसका 98 पे। आई थिंक इसमें अब कोई सपोर्ट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो बुरी तरीके से टूट चुका है स्टॉक। एंड मे बी अगर यहाँ से रिवर्सल आता है जो कि लास्ट स्विंग बॉटम है तो ठीक है। लॉन्ग की तो अभी सलाह है नहीं इसमें। देयर इज नो नथिंग टू सजेस्ट एनी लॉन्ग ट्रेड। सो नथिंग, कुछ नहीं है इसमें। आरएसी में 103 का लेवल सिग्निफिकेंट है, 103 का। आज बहुत कम क्वेरीज लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत आज डिले हो चुका है। एक्चुअली मेरा सिस्टम वगैरह जो है थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, सो हाफ ऑफ द टाइम उसी में मेरा टाइम स्पेंड हो जा रहा है, इसीलिए मैं टाइम से आ भी नहीं पा रहा हूँ लाइव सेशन करने के लिए। थोड़े दिन तक रहेगा ये तकलीफ। या सो यूएसडी आईएनआर, अगेन से यूएसडी आईएनआर में जब तक सी यूएसडी आईएनआर में पहले भी बता चुका हूँ, काफी दिनों से कह रहा हूँ, रेंज आपका यही रहेगा 74 से लेके आपका सॉरी हाँ 74 से लेके अराउंड दिस 76, ये दो पॉइंट के रेंज पे चलेगा। कोटक बैंक, यूरो, जब यूरो फायर पे रहता है तो यूएसडी फायर पे नहीं होता है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक में बी केयरफुल बिकॉज इफ टुडेज सेल सॉरी टुडेज सेलिंग अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी आज के ऊपर अगर नहीं जाता है ये स्टॉक, तो ये स्टॉक काफी गिर सकता है। जस्ट पे अटेंशन, 1360 का लेवल इसमें ध्यान देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में कल के लिए 1360 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो जस्ट पे अटेंशन नियर दिस बैंड ऑफ 1360। फिलहाल इसमें ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, बिकॉज इट इज इन नो वेयर। तो थोड़ा और नीचे आएगा तो देखेंगे लॉन्ग के लिए, बट अभी तो कोई व्यू नहीं है। 1360 का इंट्राडे लेवल वर्क कर सकता है। गोल्ड बुलिश है, गोल्ड पे सबसे पहले मैंने बुलिश कहा था। गोल्ड अभी भी बुलिश है, सिल्वर अभी भी बुलिश है। डू नॉट शॉर्ट। कल शाम को गिरेगा, अभी नहीं। सीमेंस, सीमेंस ओके, सीमेंस बेरिश है। 1150 के नीचे स्टॉक बेरिश है 1115 के लिए। ब्रिटानिया, दोस्तों वीडियो पे लाइक्स नहीं आएंगे तो फिर इतनी रात को आने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 2-3 स्टॉक ही मैं लेता हूँ अभी फिलहाल, देन वी विल सी टुमारो। ब्रिटानिया देखो 3720 का सपोर्ट है। 3720 पे कल वॉच करेंगे। 3720 नेक्स्ट। एनी अदर स्टॉक, जस्ट लेट मी नो। बाटा, ओके, गुड सजेशन। एक डेडिकेटेड करेंसीज का चैनल शुरू कीजिए फॉर एजुकेशन, इट विल बी बेनिफिशियल। ये चैनल पे तो आप लोग लाइक करते नहीं हो, अभी एक और चैनल बनाऊं मैं।
Okay, Bata once again it has come to 1265. Be careful. बाटा शुड रिवर्स वेरी सून और else इसमें गिरावट जो है सिग्निफिकेंट हो सकती है। कल की क्लोजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि कल की क्लोजिंग ऊपर चाहिए, कल की क्लोजिंग ऊपर चाहिए। आई डोंट वांट टू सी बाटा एट दीज लेवल्स, यहाँ पे फिर ट्रिकी हो जाएगा। फिलहाल जो सपोर्ट है, लास्ट जो स्विंग बॉटम बना था बाटा का, ठीक है, दैट इज अ गुड सपोर्ट। फ्रेश लॉन्ग अभी करने में खतरा ही है, किसी भी प्रकार का रिवर्सल नहीं हुआ, जस्ट स्टे असाइड। जिनका शॉर्ट है ट्रेल करो, शॉर्ट जिनका है ट्रेल करो, शॉर्ट में प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करिए। फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोमेंटम ऑन द लॉन्ग साइड इन दिस स्टॉक। थोड़ा सा एक्सपायरी वगैरह हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। सेंचुरी, लेट मी सी, ओनली टू मोर स्टॉक्स आई विल टेक एंड देन विल वाइंड अप टुडे सेशन। ज्यादा फोकस निफ्टी बैंक निफ्टी पे था। आई जस्ट केम, एक्चुअली मैं आने वाला नहीं था, आई जस्ट केम बिकॉज मैंने स्टूडेंट्स को कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ। ओके, सो सेंचुरी टेक्सटाइल अगेन ट्रायंगल मूवमेंट है। आई थिंक सेंचुरी बेरिश है, सेंचुरी फिलहाल थोड़ा बेरिश है। आई फील ये जो बॉटम बना था ये बॉटम टेस्ट होगा नियर दिस 280 मार्क। सो नो व्यू, सी इट्स अ नो व्यू, कंप्लीटली रेंज बाउंड है, कुछ खास इसमें ट्रेंड भी नहीं है। तो 292 लास्ट एक सपोर्ट है। I don't think it is going to hold. Sooner or later, in next few days, I think 292 is going to break. Excite. Okay, last stock. Excite and Axis Bank. These are the last stocks. Excite again bearish, clear cut bearish है। Excite 148 का लेवल आपको दिखाने वाला है, उसके भी नीचे जाने वाला है। Excite जो है 144 का लेवल आपको दिखाने वाला है। 148 144 इज कमिंग। कल के लिए 155 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। ओके, लास्ट स्टॉक एक्सिस बैंक। अदानी पोर्ट हो गया, आई विल टेक अदानी पोर्ट। ओके, एक्सिस बैंक वंस अगेन सेम लेवल्स पे आ चुका है। टुमारो आई थिंक इट शुड टेक सपोर्ट नियर 428। टुमारो बी वॉचफुल ऑन एक्सिस बैंक। ओके, if it takes support near this 426 and gives a decent reversal, तो कल रात को एक बार इवेल्युएट करेंगे। हो सकता है परसों इसमें शानदार एक ट्रेड मिले टुवर्ड्स 460 462। सो कल इस स्टॉक को एक बार चेक करेंगे। 426 427, दिस इज अ नाइस सपोर्ट। आई थिंक इट शुड टेक सपोर्ट हियर एंड रिवर्स, बट कल रात को देखेंगे कि किस तरीके का रिवर्सल हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे परसों के लिए। ओके, जिनको टेक्निकल्स आता है वो कल की क्लोजिंग वगैरह देख के भी ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट स्टॉक अदानी पोर्ट। ओके, लास्ट स्टॉक अदानी पोर्ट। सो अदानी पोर्ट, many people are expecting reversal, but no, reversal is still not there, and stock थोड़ा ऊपर जाएगा, अराउंड 315 के आसपास जा सकता है, बट अगेन आई थिंक इट शुड कम वंस अगेन। सो अदानी पोर्ट इज बेरिश, अदानी पोर्ट इज बेरिश, डेफिनेटली बेरिश है। ये स्टॉक जब तक 325 के नीचे है, स्टॉक में मंदी ही रहेगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म में आई थिंक 315 तक जा सकता है, बट रिवर्सल करेगा, वापस नीचे आएगा एंड इट विल रीटेस्ट द 300 मार्क। भारतीय एयरटेल, आज इंट्राडे अच्छा बाउंस आया है भारतीय एयरटेल में, एंड tomorrow is a very important day for भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल हैज टू क्रॉस टुडेज हाई। अगर आज के हाई को कल ये क्रॉस नहीं करता है तो कल वापस ये स्टॉक आपको नीचे देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 548। क्योंकि 10 पॉइंट 10-12 पॉइंट जो है कल ये गिर सकता है। आज के हाई के ऊपर ये ट्रेड करने लगे, आज के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर काफी अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। हिंडाल्को, चलिए बस दो स्टॉक, दो स्टॉक और लेंगे। हिंडाल्को,
अभी थोड़े दिनों तक टाइमिंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा, सो आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। ओके, से हिंडाल्को यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक जो एक सपोर्ट जोन पे आने वाला है, सो ठीक है, अभी तक कोई रिवर्सल नहीं है, हालांकि आज का कैंडल इनसाइड बार है। सो फिलहाल जो है 163 से 157 का रेंज आपको देखने मिलेगा, 163 से 157 का। गोल्ड सिल्वर सब बुलिश है यार, रोज वही क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, कब से मना कर रहा हूँ मत शॉर्ट करो। ओके सो दोस्तों, बस आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। छोटा सेशन ही रखना था क्योंकि लेट बहुत हो चुका है। एंड एक लास्ट क्वेरी ले लेता हूँ मैरिको पे आई थिंक सेम व्यू है। आज थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हुई है 350 पे। सो ठीक है, नेवरदलेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 348 का, जो पहले वाला जो सपोर्ट है, आई थिंक जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से ही ऊपर जाएगा। इस बार जब 360 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसमें मेजर ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, चलिए। सो अरे हेल्थ वेल्थ ठीक है, हेल्थ वेल्थ सब ठीक है। मेरा जो सिस्टम्स है ना, मेरा जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है, इसमें थोड़ा तकलीफ आ रहा है 2 दिन से, तो मैं उसी में काफ़ी बिजी हो जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो वाइंड अप करेंगे। गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट में मत फंसो, रोज समझा रहा हूँ। अभी बहुत शो बाकी है गोल्ड सिल्वर में। क्रूड में भी गेम होने वाला है। क्रूड में आज मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया है, कल आप लोगों को भी अपडेट करता हूँ कि क्रूड में क्या गेम होने वाला है। सो लेट अस वाइंड अप फॉर टुडे। कल जो है डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी में डेफिनेटली ध्यान देना है, बिकॉज वेडनेसडे से एक्शन शुरू हो जाएगा। सो आज और कल जो हो रहा है ये सिर्फ टाइम पास एक्टिविटी है, रियल एक्शन जो है वेडनेसडे से शुरू होगा। कल मार्केट बॉटम हो सकता है, बॉटम होना चाहिए कल। ओके सो अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि कल मार्केट बॉटम होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं भी बाय कर लेना। व्यूज को ध्यान में रखिए, लेवल्स को ध्यान में रखिए, एक्सपायरी है इस बात को भी ध्यान में रखिए, और पॉकेट साइज के हिसाब से काम करना है। ठीक है, सो आज के लिए बस यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आज बहुत ही छोटा सेशन रखना चाहता था मैं, एंड दैट्स ऑल। ठीक है गाइस, सो ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे। होपफुली कल अगर सिस्टम मेरा सब अच्छा रहा, नॉर्मल रहा, तो डेफिनेटली 2 घंटे का भी लाइव सेशन में कर दूंगा। बट थोड़े दिनों तक थोड़ा सा इरेगुलरिटी चलेगी। ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।